अनुमत था मूसा वहां तक पहुंचा। And at what time he did that? और किस समय उसने ऐसा In a किया? time that God was angry with a people who disobeyed the voice of God. और ऐसे समय में जबकि परमेश्वर एक लोगों से नाराज था क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। But God heard the cry of the hungry heart. परंतु परमेश्वर ने भूखे हृदयों की And I want to पुकार tell you, saints of और God, मैं ये कहना चाहता I हूं, am not preaching a theology this morning, और मैं किसी प्रकार की थियोलॉजी की यहाँ प्रचार but नहीं I कर would रहा। like to bring the mind and the heart of God to His people this morning. परंतु मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का इरादा और उसकी मनसा उसके लोगों तक आज सुबह Your पहुंचे। hunger will take you to places in God that nothing else can take you. आपकी भूख परमेश्वर के उन स्थानों में आपको ले जाएगी जहां पर कोई दूसरी वस्तु नहीं ले जा सकती। Yes. God would draw Himself towards such lives. परमेश्वर ऐसे जीवनों की ओर अपने आप को लाएगा। It's not a matter of how good we think about the Lord और बात यह नहीं है कि हम कितना भला परमेश्वर के विषय में सोचते or हैं how much we are doing things for God. और या परमेश्वर के लिए हम कितने कार्य कर रहे हैं। His senses are dull towards these things. उसके एहसास जो है इन चीजों के लिए बिल्कुल मध्यम है। God's senses are dull to the supposed strengths and virtues of God's people. और परमेश्वर के लोगों की जो वो भलाई करते हैं, परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, उनके लिए वो बिल्कुल मध्यम है। Yes. Who think that they can be drawn or God can be drawn towards them in and through these things. और जो सोचते हैं कि इन कार्यों से परमेश्वर उनकी ओर खिंचा चला आएगा। God is dull. His senses are dull. उसके एहसास इन कार्यों के लिए बिल्कुल मध्यम है। The strengths and the virtues of mankind. जो मनुष्य की शक्ति में होती हैं और उसकी भलाइयों के अंदर होती हैं। But our God takes notice परमेश्वर इस बात का ध्यान करता है of the slightest of divine desperation. उनकी छोटी सी दैविक लाचारी की ओर भी And a holy hunger और एक पवित्र भूख की ओर भी in the least of us. हम में से छोटे से I would say that छोटे, again. इसको मैं दोबारा कहूंगा। But our God takes notice of the slightest hint of divine desperation. और परमेश्वर एक छोटी सी लाचारी जो हमारे अंदर होती है उसका भी ध्यान And a रखता है holy hunger in the least of us. और हम में से छोटे के अंदर एक पवित्र भूख होती है। Whosoever we may be, we may be the least here. और चाहे वो हम में छोटे से छोटा क्यों ना हो, You know, just come recently to the Lord. और जो कि अभी अभी प्रभु के पास आया हो, But if there is a slightest of divine desperation within that heart, परंतु एक उस हृदय के अंदर एक छोटी सी दैविक लाचारी है परमेश्वर के लिए, I think the Lord takes notice of तो that. परमेश्वर उस बात का ध्यान अवश्य करता है। You know, the Lord would leave behind everyone else and would take care of that life. और परमेश्वर प्रति एक जन को एक तरफ करते हुए उस जीवन का ध्यान पहले करे। Yes, God is no respecter of persons. परमेश्वर किसी का भी पक्षपात करने वाला I नहीं। want to tell you, saints of God, और मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर के पवित्र लोग, God can never be drawn into our programs, our ideas, our this, our that. परमेश्वर कभी भी हमारे कार्यक्रमों के अंदर, हमारे विचारों के अंदर, हमारे इस कार्य में उस कार्य में कभी भी वो नहीं आता। Yes. It is a work of God. ये परमेश्वर का कार्य है। And when He does it, और जब वो ये कार्य करता है, oh, saints of God, you know it is God. तो Hallelujah. परमेश्वर के प्रिय लोग हम जानते हैं कि वो परमेश्वर Now, है। that's one thing I want to say that again to you. और एक बार फिर से मैं ये कहना चाहता हूं, When it happens in you, you know it is God. और जब ये सब कुछ आपके भीतरी भागों में होता है तो आप जानते हैं कि ये You परमेश्वर, don't need anyone to confirm that to you. और इस चीज का सबूत देने के लिए किसी की आवश्यकता हमें नहीं होती, You don't need anyone to confirm to you. और इस You चीज को know प्रमाणित करने के लिए it किसी की is आवश्यकता नहीं। the hand of God. हम जानते हैं कि ये परमेश्वर का ही हाथ है, Yes. Because it happens in your depths. क्योंकि ये आपकी गहराइयों में होता है। A filling work. एक भराई का काम, You begin to experience the person of the Lord और and such a measure deep within your being. आप प्रभु के व्यक्तित्व को अपनी
गहराइयों के अंदर इस रूप से महसूस करने लगते हैं। I'm reminded of an example. और मुझे एक उदाहरण का स्मरण आता The है, example of Saul, who became Paul later on. सौल का एक उदाहरण जो कि बाद में पौल बन गया। You know, on the road to Damascus, दमिश्क के मार्ग के अंदर Saul didn't have to be introduced to Jesus Christ. सौल को आवश्यकता नहीं थी कि उस प्रभु यीशु मसीह का परिचय उससे कराया जाए, But on the road to Damascus, परंतु दमिश्क के मार्ग में जाते हुए when this great light hit him, जबकि ये महान प्रकाश उससे टकराया, he knew in his heart वो अपने हृदय में जान गया that he was meeting with the glorious presence of the Lord. कि वो महिमा युक्त परमेश्वर की उपस्थिति से भेंट कर रहा है। Deep within him. उसके मन की गहराइयों में वो जान गया। Yes, he did cry out and say, "Who are you, Lord?" और उसने पुकार कर कहा कि हे प्रभु तू कौन है। That was because of the religious cloud that was within him. और क्योंकि वो धर्म का बादल जो उसके अंदर था उसी के कारण से हुआ। But he knew deep within him whom he met. परंतु वो जानता था अपनी गहराइयों के अंदर उसकी भेंट, उसकी मुलाकात। An introduction was not necessary for और यहाँ Paul. पर इसलिए वो प्रभु का परिचय की आवश्यकता नहीं थी। Saul never needed an introduction. He knew deep within it was Christ, it was the Lord. और सौल को कभी भी परिचय की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वो जानता था अपनी गहराइयों में कि ये मसीह है। And I वो want to प्रभु tell है। you, saints of God, और मैं ये कहना चाहता हूँ we don't परमेश्वर के need प्रिय any लोगों, confirmation here. और यहाँ पर किसी चीज को प्रमाणित करने की आवश्यकता We नहीं, need no introduction here. यहाँ पर किसी परिचय की आवश्यकता नहीं। When, the hand of God does something, we would know it is He. It और is He जब and no one else. परमेश्वर का हाथ हमारे भीतरी भागों में कुछ करता है तो हम जानते हैं कि ये परमेश्वर ही है। Yes. It is something in the depths. और ये गहराइयों में कुछ It is not something in the mind. ये मस्तिष्क की बात नहीं, It is not a kind of spiritual ride of some kind. और या कुछ आत्मिक उठान में हम कहीं चले जाएं, But it's something deep within you. परंतु ये कुछ भीतरी गहराइयों के अंदर है। And there will be such a response. Lord, what will you have me to do? और फिर इस प्रकार का उत्तर होगा कि हे प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। There is going to be a submission and an acknowledgement of His person and His work. और फिर एक उसकी एक मान्यता होगी उसके व्यक्तित्व की और उसकी अधीनता हमारे अंदर आएगी। Yes. God will never turn away from a heart that is really desperate for Him and hungry for Him. और परमेश्वर कभी भी ऐसे हृदय को नहीं तो जानेगा या छोड़ेगा जो वास्तव में उसके लिए इतना उत्सुक है और लाचार है। Saints of God, परमेश्वर के प्रिय for लोगों, too long, बहुत समय तक the church has trumpeted to the nations और and sounded to the nations saying, the Lord is here. और कलीसिया का आवाज जो है वो सुनाई दी गई राष्ट्रों को कि प्रभु यहाँ मौजूद है, The Lord is here. यहाँ प्रभु है। When there was not enough of Him. जबकि उसका इतना वहां पर नहीं था, वो इतना नहीं था वहां पर। The church has been trumpeting there saying, the Lord is here with us. और कलीसिया इस बात का नरसिंगा फूंक रही थी कि प्रभु हमारे बीच में इस कलीसिया में है। When there was not enough of Him, जबकि प्रभु वहां उतना नहीं था to show the church to be totally different from the rest of the world. ताकि वो दिखा सके कि कलीसिया बाकी संसार से बिल्कुल विभिन्न है। To show the church discernibly different from the rest of the world. और दिखा सके परख के कि ये कलीसिया दूसरी संसार से कितनी अलग है। Our claims have been true in one sense, और हमारे दावे जो हैं एक मायनों में सही हैं that our God is omnipresent God, कि हमारा परमेश्वर हर एक स्थान में मौजूद and है so He was present. और इसलिए वो मौजूद था। In that sense, He is present everywhere. तो उस प्रकार से तो वो पूरे संसार में उपस्थित है। But that unique, manifest presence of the Lord, that is the portion of the church that we have missed out. परंतु वो एकमात्र उपस्थिति परमेश्वर की
जो कि कलीसिया में होनी चाहिए, उससे हम वंचित हैं। We have the doctrinal declaration और हमारे पास एक शिक्षा की घोषणा है that the Lord is alive कि प्रभु जीवित है and the Lord is here. और प्रभु यहां उपस्थित है, But the manifest presence was not there. परंतु उसकी प्रकट की हुई उपस्थिति वहां मौजूद नहीं थी। Yes. It is His manifest presence, saints of God, that we must become hungry for in these days. और ये केवल उसकी प्रकट की हुई उपस्थिति है जिसके लिए हमें इन दिनों में भूखा होना चाहिए। The undeniable moments when you know He is here. और ऐसे क्षण जिसमें इनकार नहीं किया जा सकता कि वो यहां है। That is precious. The undeniable moments. ऐसे क्षण जिनमें इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रभु यहां नहीं है। You know in your life. आप जानते हैं अपने जीवन में, I know in my life. मैं अपने जीवन में खुद जानता Such हूं, times of His presence that we have experienced. इस प्रकार की उपस्थिति के समय हमने अनुभव In किए some small measure sometimes. और छोटी छोटी सीमित रूप से। But God's desire is a greater measure of His manifest presence in the midst of His people. परंतु परमेश्वर की इच्छा यह है कि उसकी प्रकट की हुई उपस्थिति उसके लोगों में बहुतायत के साथ आए। Yes. As we have been hearing over a period of time, और जबकि हम कुछ समय से इस बात को सुनते चले आ रहे हैं, God wants to pour out the concentrated essence of His manifest presence on us. परमेश्वर चाहता है कि उसकी प्रकट की हुई उपस्थिति की शुद्ध उपस्थिति जो है वो हमारे ऊपर डाले। That is His desire. वही उसकी इच्छा है। As He says in His word, और जैसे वो अपने वचन में कहता है, I and my Father and we will come and will abide. मैं और मेरा पिता आएंगे और तुम्हारे साथ रहेंगे। Yes. In all the fullness. पूरी परिपूर्णता में। That is the desire of God. यही परमेश्वर की इच्छा है। That is the desire of God. ये परमेश्वर की इच्छा है That is what He is looking for. और इसी के लिए वो देख रहा है, That His खोज रहा है glory may fill the house. कि उसकी महिमा In other words, भवन को भर दे। दूसरे शब्दों में, That He may pour out the concentrated essence of His manifest presence कि वो on His people. शुद्ध सुगंध जो उसकी प्रकट की हुई उपस्थिति की है अपने लोगों पर उंडेल दे। But He is looking for a place परंतु वो एक स्थान की खोज में है to pour out. कि कहां उंडेले। To pour out the concentrated essence of His manifest presence, He is looking out for a place. कि वो अपनी शुद्ध सुगंध की उपस्थिति, सुगंध जो उसकी प्रकट की हुई उपस्थिति की है, कहां पर उंडेले। He must find a place, isn't it? उसको एक स्थान की आवश्यकता There है is no collected emptiness where He can pour this. और वो देखता है कि एक खालीपन एकत्र कहां किया गया हुआ है जहां पर वो अपनी इस शुद्ध सुगंध को डाले। He wants to pour out, और वो उंडेलना चाहता है, but there is no collected emptiness. परंतु खालीपन एकत्र नहीं किया There गया is है। no cumulative emptiness where He can pour the essence, the essence, the concentrated essence of His presence. और इतनी क्षमता उस खालीपन में उसे वो जगह नहीं दिख रही जहां पर के अपनी प्रकट की हुई उपस्थिति की शुद्ध सुगंध उंडेले। Yes. God is not able to find that emptiness, that cumulative emptiness where He can pour the concentrated essence of His manifest presence. और परमेश्वर उस स्थान को नहीं पा सका जहां पर के बहुत बड़ी क्षमता का खालीपन हो ताकि वो अपनी प्रकट की हुई उपस्थिति की शुद्ध सुगंध वहां उंडेल दे। My people, I long for you to worship me. If there is one thing I desire,
I have sent my son to be the pattern for you, and I've created the first man, Adam, to worship me. So sing praise to the Lord, all ye lands, and sing praise to the Lord in all the earth. And I will lift ye up, I shall exalt my son in you, my people, forevermore. I will sing unto you, my God, with all of my heart. I will sing unto you, my God, while I have my being, and with all that is within me, I will praise your holy name. For thou art worthy, and I've been created to worship thee. And with all that is within me, I will praise your holy name. For thou art worthy, and I've been created to worship